सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एंड इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट वैक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए शुरू करते हैं। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड जो है वो कुछ हद तक ऐसे दिखता है। ओके एंड इसका टोटल दो कंपोनेंट है। ओके, वन इज ग्लिसरॉल, अनदर वन इज फैटी एसिड। मैं रेड कलर से जो लिखा हूँ वो फैटी एसिड का पार्ट है एंड ब्लू कलर से जो लिखा हूँ वो आपका ग्लिसरॉल का पार्ट है। ओके, यहाँ पर टोटल 3 फैटी एसिड होता है एंड ग्लिसरॉल होता है। ओके, अगर जो 3 फैटी एसिड है उसका जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो सेम है एग्जैक्टली, हम लोग बोलते हैं कि दे आर सिंपल ट्राइग्लिसराइड। मतलब 3 एक ही तरह के फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन के माध्यम से जुड़ के अगर ट्राइग्लिसराइड्स बनाए तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ ए सिंपल ट्राइग्लिसराइड, राइट। एंड अगर वो 3 फैटी एसिड अलग अलग फैटी एसिड हुए तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ ए मिक्स ट्राइग्लिसराइड। क्लियर गाइस? नाउ अगर हम लोग अब ट्राइग्लिसराइड के स्ट्रक्चर को गौर करें एक चीज़ तो एकदम क्लियर है कि ट्राइग्लिसराइड्स का जो फैटी एसिड वाला पार्ट है उसका COOH ग्रुप ग्लिसरॉल के साथ बॉन्डिंग करने पे जुड़ा हुआ है, राइट। दे आर इन्वॉल्व इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विद द ग्लिसरॉल, राइट। एंड दैट इज़ वाई ट्राइग्लिसराइड्स का कोई भी चार्ज नहीं होता है। ओके, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ट्राइग्लिसराइड्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल लिपिड। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। And obviously they are non-polar and hydrophobic in nature. Okay, and majorly they are the stored form of lipid. Okay, so that is the idea. Now ये चीज़ भी है, ट्राइग्लिसराइड्स का जो फैटी एसिड पार्ट है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हो सकते हैं। नाउ ट्राइग्लिसराइड्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ट्राइग्लिसराइड मिक्सचर फैट है एंड कौन सा ट्राइग्लिसराइड मिक्सचर ऑयल है। ये चीज़ हम पहचान सकते हैं बाय लुकिंग एट देयर फिजिकल स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। ओके, ये चीज़ को समझने के लिए आपको इसका जस्ट पहले वाला वीडियो देखना होगा जहाँ पर हमने बात किया था अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, राइट, एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अगर आपने ये बात को पकड़ लिया तो मैं अगर आपको बोलूँ कि अगर आपका जो ट्राइग्लिसराइड मिक्सचर है उसमें हाई चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो वो फैटी एसिड containing triglycerides will be solid at room temperature and you will call it fat। अगर मैं आपको ये बात बोलूँ आप एग्री करेंगे, राइट, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। सैचुरेटेड फैटी एसिड को लिक्विड में लाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल at room temperature because room temperature is just 37 degree Celsius, right? So now in case of oil, at room temperature those mixture of triglycerides are oil which are liquid, right? And ये समझने पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि those mixture of triglycerides are high unsaturated fatty acid chains, right? So that is the thing. मैंने यहाँ पर एक चीज़ ही बोली है कि फैट विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आर मिक्सचर ऑफ ट्राइग्लिसराइड containing a high proportion of long chain saturated fatty acid. On the other hand, oils are liquid at room temperature because they are mixture of triglyceride containing high proportion of long chain unsaturated fatty acid because unsaturated fatty acid का melting point कम है, that is why they are easier to melt, right? So now let's move to the another point from which questions may came. So triglycerides
function as a energy reservoirs. Now, why is so? Because triglycerides are less oxidized as compared to carbohydrate and protein. That is why they yield more energy per unit mass on complete oxidation. Okay, and that is why hibernating animals and migrating birds use stored triglyceride as their sole source of energy. Not only that, in animals, adipose tissues or fat cells are specialized for synthesis and storage of triacylglycerol. So, triacylglycerol functions as an energy reservoir. It is very important to know. So, they are stored lipid and they are energy reservoirs. Now, saponification. We all know about the concept of saponification. So, this is mainly the saponification, which is hydrolysis of ट्राइग्लिसराइड विद द हेल्प ऑफ एल्कली. यहाँ पर मैंने जो पिक्चर नेट से लिया है वहाँ पर सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड से दिखाया गया है. यू मे ऑल्सो यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो. ओके, एंड ड्यू टू दिस हाइड्रोलिसिस यू विल गेट ग्लिसरॉल and soap, which is actually the salt of fatty acids, right? Here as we have used sodium hydroxide, so it is sodium salt of fatty acids. Clear? Now here another important concept to remember, that is the saponification number. So what do you mean by saponification number? Saponification number is the number of milligram of KOH required to saponify 1 gram of fat. Okay, this is the saponification number. Now अब मुझे पूछोगे कि क्यों जानना है saponification number? So saponification number is important to determine the average molecular weight of a fatty acids. Okay, so यहाँ पर मैंने ये चीज़ ही एक नोट की तरह लिखा है. हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड विद एल्काली सच एज NOH and KOH is called saponification. Saponification yields salt of fatty acids termed as soap and glycerol. So the number of milligram of KOH required to saponify 1 gram of fat is known as saponification number, which is useful for measuring the average molecular weight of fat. Okay, so it is useful to measure the average molecular weight of fat. शायद मैंने थोड़ी देर पहले बोला था it is useful for average molecular weight determination of fatty acid. So both are correct, right? क्योंकि फैट तो फैटी एसिड से ही बनता है. सो फिलहाल याद रखना यूजफुल टू मेजर द एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ फैट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो, दैट इज वैक्स. ओके, सो वैक्स आर टिपिकल एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स and also long chain monohydroxyl containing alcohol. Okay, so this is a structure of wax which is nothing but a ester. Okay, so long chain monohydroxy alcohol and long chain fatty acids together gives us wax. So both animal and plant waxes are available. So in case of animal wax, the common and most important example is beeswax. हम लोगों को वैक्स के केस में एग्जाम्पल याद रखना होगा. सो इन केस ऑफ एनिमल वैक्स इट इज़ beeswax and in case of plant wax it is caranova wax. So beeswax is made up of triaconetanyl palmitate, which is ester of palmitic acid, and triaconetanol, which is a alcohol. Okay, and it is the major component of the beeswax. On the other hand, in case of plant, caranova wax is important, which is a hard wax obtained from Copernicia prunifera waxes. So now हम लोगों को ये दो चीज़ याद रखना था कि एनिमल वैक्स इज एग्जाम्पल ऑफ एनिमल वैक्स बीज वैक्स एंड एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वैक्स इज कैरानोवा वैक्स. और एक चीज़, वैक्स आर सर्विंग एज ए एनर्जी स्टोर्स एंड वाटर रिपेलेंट्स. ओके, ये दो चीज़ वैक्स में इम्पॉर्टेंट है. एंड और एक चीज़ याद रखना कि दे आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल और हायर मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल. ओके, सो दैट इज़ द थिंग इन केस ऑफ वैक्स. यहाँ पर ट्राइएसाइग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड इंपॉर्टेंट था, विच आर एस्टर्स ऑफ 3 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लिसरॉल. ओके, याद रखना होगा कि फैट
कब हम किस ट्राइग्लिसराइड मिक्सचर को हम फैट बोलेंगे एंड किस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल मिक्सचर को हम ऑयल बोलेंगे, ये चीज़ को याद रखना होगा. एंड ऑल्सो याद रखना होगा अबाउट द सैपोनिफिकेशन, डेफिनेशन ऑफ द सैपोनिफिकेशन एंड द सैपोनिफिकेशन नंबर. Okay, another important thing they may also ask, that is the iodine number. Okay, so iodine number is the number of grams of iodine added to 100 gram sample of fat or lipid is known as iodine number. So iodine number हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? To determine the degree of unsaturation. Okay, so ये चीज़ भी दे सकता है. So और एक बार बोल रहा हूँ, the number of grams of iodine added to 100 gram sample of fat or lipid, दोनों चीज़ एक ही है, is known as iodine number. Okay, it is actually the number of grams of iodine that can be added to 100 gram of sample lipid, right? And we are using this to determine the unsaturation of the fatty acid or unsaturation of the lipid. So I hope this video will be helpful for you. Thank you.